नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। पहले तो श्री कुलदीप रत्नू जी को थैंक यू बिकॉज आपने मेरे बारे में सोचा इस टॉपिक के विषय पर, और थैंक यू फॉर द वेरी काइंड इंट्रोडक्शन दैट यू गिव विथ रिगार्ड टू मी। I would like to proceed my talk by saying that I am not going to talk about politics at all. I have often found that in any sort of developmental work, or rather most developmental work, politics often comes into, we lose our sense of perspective sometimes. It becomes only about politics and not the work. I found this most often when it has to do with anything to do with women, because it is a very divided field, for versus against, and we find that sometimes we lose track of what actually the issue is. Let me start by giving a simple background. Now, when you talk about women, you are talking about roughly half the population of the world. Most women have very similar circumstances in which they live throughout the world. Most people assume that because India is a so-called backward country, women here are worse off, etc. But believe me, ये सच नहीं है. I have traveled to about 27, 28 countries in the world, and in every single country, except perhaps in one or two, which don't include the United States and Japan, and you'll be surprised to know this, and Australia, poor women or disadvantaged women or women with less education, less access to social resources have very similar lives. They face very similar barriers. They are treated very much the same way by perhaps not all government, but a large part of the governance system. And socio-culturally, they are in a very, very similar place. Also, when we talk about women, we must understand that we don't talk about women in isolation. Women are part of every country's population. Women are part of the overpopulation that the world has. As human beings, we all share the same resources, whether it's natural resources, whether it's economic resources, etc. Now, natural resources, as we know, are limited. If we look at data and you see what the population was 100 years ago and what it was today, whether it is with reference only to India or with reference to so-called developed countries or the whole world, you will find that we have grown by almost 10 times more than what we were a century ago, if not more. And given that we have very limited resources, there is a need for population planning, because many other issues impact sizes of families. Therefore, it is nowadays it's called more population control than families. One of the most important needs for any country where population is well below replacement level, which is actually too ideal, that is a man and women, they can have 2 children, which means the population will not grow, it will remain static, is the fact that every country has a finite amount of land that we live on. अगर हम इंडिया की बात करें तब आप सोचिए, we are already 1.38 billion people. In about less than 10 years, we will overtake China, and we were expected to have about 1.56 billion people. अब हमारे जो सीमाएं अगर आप देखें तो you will see that on one side, of course, हमारे चाइना जो हमारे सबसे बड़ा अच्छा दोस्त है, they are always trying to come into India and take part of our land. But the pressure on land is enormous. It's in fact too much. It has created many conflicts, not just between countries, but between man and all other natural resources, whether it is water, whether it is animals, whether it is food, whether it is even the seas, when we exploit them for food, for naval exercises, for anything, for even travel. Shipping industry is also largely dependent on that. The sheer number of people has become economically and socially unviable for the country. Of course, politics is also a large part of it, but जैसे मैंने कहा है, I don't want to bring politics into it. The politics of religion, the politics of economies, the politics of many things, the politics of culture itself often blurs the boundaries that I feel today we should look at or stay within. Now, there are pros and cons for a population policy. The Indian government, and as we know, the Assam Chief Minister has already announced
that he will be introducing a population policy at Assam. There has been a huge outcry both for and against this. The Indian government also eventually may, I don't know if it is actually going to happen or not, if it can happen or not, because any government has to also take political considerations into make that part of the context. But the Indian government could well be looking at some sort of population policy, which could be mostly about incentives and disincentives. But when we talk about population policy, we need to understand two things. That yes, most planners are men, etc. But in any policy that concerns a family or a population, both men and women have to be on board. It is not that we need more women in a panel that's deciding it, or a council is going to be set up, or a committee is going to be set up, or in the Niti Aayog, etc. You need voices from both sides. You also need to be able to understand that India is such a vast country that existing socio-cultural and religious differences cannot be ignored when any policy is made. Family is very personal to everybody, regardless of religion, regardless of economic and social differences, just regardless. Family, especially in India, is a very, very personal thing. It is very difficult for most people to accept that a third entity, in this case the government, whether it's state or center, will bring in certain rules. As it is, Indians, as you know, we don't like following rules. We rarely, if ever, follow rules. The fact that it's a psychological disadvantage that will put any government very often on the mat. It may bring up problems for them. It is also understood, and these are data. If you want, I can present them to you, but presenting data always takes a much longer time, but I can present them to you. You will find that in better education sections of society, generally, this is not a blanket thing. It's not a blanket fact at all. You will find sizes of families are constricting. They are becoming smaller. That is, educated youngsters or educated couples will have smaller families, lesser children, than people who come from less educated and less advantaged or economically and social backgrounds. There is two ways of looking at a population policy. One, where you say it is voluntary. Two, where you offer incentives and disincentives. Three is when you actually bring in a law saying that if you have so many children, you will not get a government job, or you will not get a ration card, or some other way of offering a disincentive. This also means that we have to look at both the short term and the long term. The government of India or the state governments will have to take into, it will have to take on board the fact that we are going to have to look at the population policy in two ways. In the short term, perhaps disincentives and less voluntary rules, for want of a better word, will have to be brought in. But in the long term, one of the most important factors that has been shown throughout the world to lessen the size of families, lessen the number of children couples have, is education, both men and women. I have worked for too long in the women's field to say कि हमें तो पुरुषों की आवाज की जरूरत ही नहीं है, पुरुषों की support की जरूरत ही नहीं है. It is not true. Any family is made up of both men and women, both good and bad, and you have to take both sides into consideration. However many disincentives, I feel this personally very strongly. Many may disagree with me. However strong the disincentives may be, ultimately they will succeed if an individual or a couple feels that हमें भी इससे कोई फायदा होगा, या हमारे लोगों को भी इससे कुछ मिल सकता है, which is where the whole incentives versus disincentives argument itself begins. Now, when you talk about family planning, let us look, since Ratnuji wanted me to talk about the impact it has on women, any population policy, there are pros and cons. Given the fact, let me start with the cons. Given the fact that we still, today, we don't live in an equal world. There is rich versus poor, there is gender issues that come up, there is those who are educated versus less educated. There are many, many issues on the table which
always you have the haves versus the have-nots. Generally, those women slowly are catching up throughout the country. Men are better educated than women. Men have many more economic and social and financial opportunities that are available to them. Now, I'm not going to go into the good and the bad of this, I'm just presenting facts. But many young women also are still are very aware of the fact, and this is, as we all say, this is a country that is looking to build their own lives. The youngsters in this country have access to social media. In many ways, social media has been a great equalizer. Social media also has its risks, but in many ways, it's become in many ways an equalizer for girls versus boys, rich versus poor, the haves versus the have-nots, etc. This is aspirational in India that we live in, and girls and women have as much aspirations as men do. Perhaps sometimes they're slightly different, but they still have aspirations. And every youngster today in India wants to have a better life, wants to access a better life. Now, even now throughout the world, it is women on whom the burden of childcare falls. And I'm using the word burden very deliberately because it's very time consuming, and often women have to do it alone. For the few women who can afford to have care, etc., for their children, yes, that's a different picture, but that's about less than 1%, less than 0.5% of the Indian population as it stands today. You will find that the obsession for having a male child in India, even now, is very pervasive, even in the cities. I always quote this one thing, that in one of the most well known family planning surveys of India, the National Family Planning Survey of India, uh, South Delhi was found to have the lowest sex ratio in the country. I think now it's a little better, it's improved, but nonetheless, South Delhi is neither a poor nor an uneducated population that lives there. So we can't jump to conclusion when it comes to a family planning policy and assume that one size fits all. Also, let's not forget the religious differences. We have now today, because of in many ways, the schisms between various religions, the fact that you actually have religious leaders talking about encouraging people from their religion to have more children. Now, again, good or bad, I'm not going into this. But the fact is that when younger girls are married off, when women have more children than, say, one or two, the burden of looking after childcare falls on these children. When I was NCW chairperson, the government of India had brought in the new the new maternity leave rules, where men are also given maternity leave and women get 6 months now. But the fact is that you don't bring up a child in 6 months. It takes at least a decade before children have a fair degree of independence. And given the amount of pressure on children with regard to education, etc., women do have much more problems than men when it comes to large families. Educated girls, and I say this again, are opting for smaller families, later marriage, etc. As you know, the age of marriage, there was a committee recently set up last year. They have given in their report to the Ministry of Women and Child Welfare and to Niti Aayog, etc., where it was recommended that the minimum age of marriage for girls should be changed from 18 to 21. That's again a contentious subject. I'm not going into it. But one of the ways of also decreasing the size of families is to increase the age of girls when they get married. Now, in India, we also know that it is women on whom the burden of most family work also falls, especially in the less advantaged sections. In the villages, for example, in the jhuggi jhopdis, for example, in those areas, whether it is collection of water, whether it is cooking, whether it is cleaning up, etc., it is women who do most of that work. It's often called drudgery because they're not paid for it, and it's thankless work for most women. When you have more children, obviously that work is going to go up. A limited amount of resources in every family will be distributed between more people than less. Also, the fact is that nutritionally, women get the rough edge of choice in most families. When it comes to food, even now,
it's not considered wrong that women and the girls eat last. Now, it has changed. I'm not saying that this is the blanket rule throughout the country. I'm not saying it doesn't exist in other countries. It has changed, but it is a fact that nutritionally, etc., women often take the back seat. And the larger a family is, the less the women in that family will get to eat. A government, especially given today's socioeconomic, environmental problems, etc., will have to look at some form of family planning. Ideally, it cannot be totally involuntary. Ideally, we have to take people on board. We have to look at both the short term and the long term. We must look at cultural, social, and religious differences. And we need to take all different types of stakeholders on board, not just men and women. You have to take religious leaders, you have to take people who actually work in fertility and family planning. You have to look at the current laws that may impact family planning or the size of a family. You have to look at how you can provide greater education to both younger men and younger women to teach them what it means to have a larger family versus a smaller family. But one of the most contentious things, and let us not forget this, is that religion often plays a big part in planning the size of one's family. Also, the fact that for some reason, even today, many reasons actually, even today, there is a preference for sons. I have worked with innumerable, even educated women. I have to admit this, from not socially disadvantaged or economically backward families who have had at least 3 to 4 daughters before having a son. And I've learned over the last 32 years to stop asking too many questions on these issues, because these are very, very emotive and very personal issues. And many people have many reasons for what they do. We need to understand the background behind why such large families are there. What happened 500 years ago would be quite different. The reasons for large families today is very different from why there were large families, say 500 or 1,000 years ago. But today, especially given the fact that the world is running out of environmental resources, the world is just running out of resources. There is a crying need for countries throughout the world to start examining the fact that we have to start looking at some form of population control. I use the word control very deliberately, because the control can be either imposed on us, or we are taught the importance of a sustainable life, not just for our generation or a couple of generations after us, but sustainable life on this planet. There are many reasons why human beings are called the most destructive of all of nature's products. And sometimes I have a couple of very, very good friends who, when I used to work in the field of HIV/AIDS, and that's how I started working with women, would tell me that there is a reason why there is a hugely skewed number of female versus male sex workers. This is not about HIV/AIDS or about any sort of disease control, but the fact is that more women live in poverty throughout the world than men do, for many reasons again, and not all of them have to do with population. But you will find that in the larger a family is, normally it is the girls and the women who have less access or less than equal access to all resources that may be available to the family, especially education. In the long term, one of the best things to do is provide good quality education to both young girls and boys equally, so that they have the choice. They do have a choice to make, and they make the choice that will be, in the long term, much more sustainable with life on Earth. Now, I have only given this is a very brief overall picture of the pros and cons. The pros are that a population policy will probably be able to give a lot of young girls the chance to delay having children, have less children, have access to better resources for their children and for their families and themselves. The cons are that in the long run, unless it is at least semi-voluntary, policies will falter, and we'll find it very difficult to not only politically survive for any party that may bring in a coercive policy, but also to ensure that, under the table, as we say,
There are many ways to get around these policies also, and people are smart enough to find those ways, not just in India, throughout the world. So if we are going to be too coercive about any policy, the chances of the policy not succeeding or rebounding politically, especially on a government, are much higher than if we have a mix of both voluntary and a certain amount of disincentives and incentives that may be offered to people who want smaller families. You will also be told that many states in India already have hit replacement level, below replacement, particularly Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, and even Kerala. But this is exactly why I'm saying that we cannot have one size fits all. Either a central policy will have to have the flexibility that states may be able to make, or have their own subsidy policy, so to speak. States also will have to look at the fact that uh, states that have hit replacement level will have other issues that they need to address if they do not want to be part of the disincentive part of any central policy that may be made. However, any policy to do with family planning has to take both men and women on board. And I would personally feel that younger men and women also need to be taken on board, not just people over the age of over the childbearing age. Younger people have a very different perspective on a lot of issues, and I have found that it is wise to listen to them, because they are the ones who are going to go forward and actually have families, and they have very many different opportunities available to them from the introduction of the IT revolution, as you know, has been called the third industrial revolution, and it has changed life throughout the world. So we need to really have young voices in both men and women, in any policy planning, family planning, whatever name we want to give it, before we actually come up with a population policy for India. Thank you very much. If there are any questions, any doubts, I'll be very happy to answer them later. Thank you very much, Lalita ji. Thanks a lot for putting your views and introducing the subject. We now have with us Dr. Antul Tewatia. Dr. Antul is a surgeon. She has studied medicine. She is also a practicing surgeon and also active in politics. Very recently, she was elected Jilla Panchayat Adhyaksh of Bulandshahr. Since she is active in Uttar Pradesh, अभी उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक प्रारूप बना है कानून के लिए, और उसके बारे में देश भर में बहुत चर्चा भी हो रही है। तो बहुत से सवाल हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतना कड़ा कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जनसंख्या पहले से ही कम होती जा रही है, जन्म दर में तेजी से कमी भी आई है, हिंदू मुस्लिम दोनों महिलाओं में जन्म दर में कुछ कमी है। लेकिन सवाल सिर्फ ये राजनीतिक दृष्टिकोण से या किसी धार्मिक दृष्टिकोण से या जातीय दृष्टिकोण से नहीं है। आप डॉक्टर हैं, आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, आप उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। तो आज की हमारी इस वेबिनार में हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पे और उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए इस तरह के कानून की क्या आवश्यकता है तो उनका क्या लाभ होगा, या क्या ऐसे कानूनों के कुछ, जैसे ललिता जी ने टच किया है, प्रोज एंड कॉन्स बोथ, सो क्या उसके कुछ खतरे भी हैं। तो डॉक्टर अंतुल तेवतिया, हम आपसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का जो कानून बना है उसके बारे में, और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार आप इस विषय को कैसे देखती हैं। आप अपना विषय रखें। So, see, Kuldeep ji, if we talk about only UP, then yes, it's very necessary. But across the globe, we continue to suffer from gender inequality. And the women role to produce children, we know that since ancient times, women were always seen as, something which only has to produce child. But in 1956, India began to start with a program of Planned Parenthood. And somehow, as Lalita ji well said, that it was very difficult
to get into the families of, especially in rural India. And if you see in UP, in Uttar Pradesh, the most of the part is towards rural India. If we talk about cities, then we have few cities on our fingers which we can count. So still we have rural part more in Uttar Pradesh. So I think that the जो भी जनसंख्या नियंत्रण कानून जो हम ला रहे हैं, स्पेशली यूपी में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं, अब यूपी में भी फेस अ प्रॉब्लम that females are forced to marry at a very young age. And what I feel that when they marry in a very young age, the number of years a woman has spent in education, she inversely spent that a lifetime in childbearing, what I think. And as a doctor, what I see that it's even more important than if a female is carrying a child for, let's say, third or fourth time, then there are a lot of complications which come. We have a lot of postpartum things, and we have parity marital health issues. Females suffer a lot of parity maternal health issues. So in UP, and according to also a United Nations Population Fund, that 830 women every day, she dies because of childbirth and carrying a pregnancy. That is the data according to United Nations Population Fund. So in UP, we still have to go a long way on, we still have to go working a long way on, let's say, having a girl educated on population, how to have a, how can we have a, let's say, कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं population को. So we need to have a lot of sex education working with females. We need to have females which are more open to, which can talk on contraceptives in their family, in their offices. So what I think my thing answers your question, that in UP it's very necessary to have this rule. Thank you very much for your viewpoints and for highlighting the issues from medical perspective, and particularly women's health issues. अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कौशल पवार. जैसा मैंने बताया आपको, डॉक्टर कौशल दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, संस्कृत आप पढ़ाती हैं. कौशल जी ने मेहनत करके इस मुकाम तक आई हैं, और मैं कौशल जी से जानना चाहूंगा कि गरीब परिवार, फिर सामाजिक जो बंधन, और उसमें बड़ा परिवार, ये सब का महिला के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, उसकी शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज, उसके लिए शिक्षा के अवसर कितने उपलब्ध होते हैं, उसके लिए रोजगार की अवसर कितने उपलब्ध रहते हैं, उसके लिए स्वास्थ्य के जो परिवार का बजट है वो किस तरह से कम हो जाता है, पोषण की जो बात हुई है, और उसके अलावा भी जैसे घर के कामकाज के विषय हैं. आप हमारे यहाँ अभी भी सरकार प्रयास कर रही है कि हम घर घर में हम कम से कम नल का पानी दे पाए. तो पानी के लिए भी आप महिलाओं को ही दूर दराज भी जाना है, या अगर सुबह भी उठना है, कहीं से लेके आना है, जाना है. तो कुल मिला के ये है कि घर का सारा काम भी करना है उन्हें, बच्चों को भी पालना है, और वह जो एक जिसे हम कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक तनाव है और जो पीड़ा है, उससे भी बार बार गुजरना है. और एक महत्वपूर्ण जो तथ्य डॉक्टर तेवतिया ने बताया कि हमारे भारत में अभी भी कम उम्र में शादी कर देते हैं लड़की की, तो वह एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है. शरीर विकसित नहीं है, मन विकसित नहीं है, शिक्षा नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं आत्मविश्वास भी नहीं है परिवार को परिवार की जिम्मेदारी उठाने का. तो ये सब विषय आपने करीबी से देखे होंगे. तो मैं चाहूंगा कि आप इन विषयों को समाज के क्योंकि हम सब अब जो विषय हम जिस तरह से सोचते हैं, देखते हैं, एक मध्यम वर्ग का सोच है, तो आप उसको थोड़ा और डाइवर्स कीजिए. सबसे पहले तो मैं इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन की आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपनी बात करने का मौका दिया. तमाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं विद्वानगण
डॉक्टर अंतुल जी और डॉक्टर श्रीमती लतिका जी और सभी साथियों, मेरा नमस्कार। मैं कोशिश करूंगी जो तमाम जो चीजें आपने कही कि मेरी बातचीत में आए, उससे पहले कि मैं इन विषयों पे बात करूं, डॉक्टर अंतुल की बात से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि हमारे भारत में आज भी महिलाएं जो डिलीवरी के दौरान मर जाती हैं और उनकी वजह हम सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम कई बार अनजाने में बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो जो जिंदगी को दांव में लगाने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए इजी टू कि बच्चे पैदा करना इनका काम है, बहुत आसान है इनके लिए हर साल बच्चे पैदा करना। इस तरीके से नजरिया हम भारतीय समाज का है। और जब मैं ये बात कर रही हूँ, बिल्कुल एकदम शिद्दत के साथ ये कहना चाहती हूँ कि वो वंचित वर्ग, वो समुदाय, वो ज्यादा इससे प्रभावित होता है, खासकर जो हमारा निरक्षर वर्ग है, अनपढ़ता जहां है, अशिक्षा जहां है, वो एक तरह से, और खासकर वो अशिक्षा, मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि महिला को ही एक तरह से ये सृष्टि ने दिया हुआ है कि वो गर्भ धारण करती है, वो सबसे पहले जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून जो जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो महिलाओं की जिस तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं, इसकी आवश्यकता ही क्यों है, यहाँ से मैं अपनी बात डॉक्टर अंतुल की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी कि इसके पीछे के कारण जो हैं, वो हमारा सबसे बड़ा कारण है जागरूकता की कमी होना। और न केवल जागरूकता की कमी, बल्कि जिस तरीके से हमारा समाज का पितृसत्तात्मक ढांचा है, उस ढांचे में जिस तरीके से हमारी पूरी एक परंपरा ही बन गई है कि जो लड़का होगा, जो नाम चलेगा, वो लड़का पैदा होने से होगा। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ कि जिस वर्ग से मैं आती हूँ, और खासकर हरियाणा का क्षेत्र में जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, जहाँ की महिलाओं की समस्याओं को मैंने बहुत गहरे से देखा है, बहुत गहरे से महसूस किया है, जहाँ से उठ के मैं बाहर भी निकली हूँ, क्योंकि मैंने लगातार अपने माहौल के आसपास देखा कि एक महिला हर साल बच्चा पैदा करती है, और हर साल में उसमें से कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। मतलब एवरेज मैं बता रही हूँ आपको, हैरानी होगी, हम आज 21वीं सदी में हैं, जहां हम चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, पहुंच भी चुके हैं, पूरा ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, लेकिन एक तबका आज भी वही है जहां पर पहले था। आजाद भारत की स्थिति के बाद भी कोई परिवर्तन ज्यादा इन स्थितियों में आया होगा मुझे नहीं लगता। हालांकि मैं उस परिवर्तन को नकार नहीं रही, एक एकेडमिशियन होने के नाते और एक सामाजिक नागरिक होने के नाते इन शिद्दत से मैं इस बात को अपनी बातचीत में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हरियाणा के क्षेत्र में जहाँ की मैं चर्चा कर रही हूँ आपके सामने, वहां ये आंकड़ा है हमारे सामने कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर महिला बच्चा पैदा करते वक्त मर जाती है, तो उसके साथ ही साथ अगले साल, बल्कि अगला साल बहुत दूर की बात है, उसकी छोटी बहन को ब्याह दिया जाता है उसके घर में। उसके कारण की खोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको जो बच्चा उसके गर्भ में था महिला का, उस गर्भ में पल रहे बच्चे का पोषण नहीं मिला, या जो महिला थी उस महिला को अच्छी तरह से पोषित आहार नहीं दिया गया, उसमें ब्लड की कमी थी, उसके टेस्ट नहीं हुए, उसके इंजेक्शन नहीं लगाए गए, उसका मनोविज्ञान वो किस दौर से गुजर रही थी, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति किस तरीके से वो महिला बर्दाश्त कर रही थी, इसके आंकड़ों को, इसके कारणों को जानने की कोशिश ही नहीं की जाती। आज भी भारत का एक बड़ा वर्ग इन सारी चीजों को न केवल अपने आस पड़ोस में देखता है बल्कि व्यवहार में भी अपनाता है। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो पितृसत्तात्मक ढांचा है, माफ कीजिएगा, हो सकता है मेरी बात कुछ कड़वी लगे क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ और मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, तो हम आलोचनात्मक दृष्टि से भी मैं बिल्कुल एकदम शिद्दत के साथ अपनी बात कहना चाहूंगी। जिस तरीके से हमारा पितृसत्तात्मक ढांचा है, उसमें जो लड़के की भावना है कि लड़का ही पैदा होना चाहिए, हम बहुत सारे हरियाणा के क्षेत्र और खासकर मैं नॉर्थ इंडिया की जब बात कर रही हूँ, वहां पर अगर एक लड़की पैदा हो जाती है पहली, ये न केवल अशिक्षित वर्ग बल्कि शिक्षित वर्ग का आंकड़ा भी है। डॉक्टर अंतुल मेरी बात से सहमत हो सकती हैं क्योंकि हेल्थ में काम कर रही हैं। न केवल अशिक्षित बल्कि शिक्षित वर्ग में भी अगर लड़की पैदा हो जाती है, तब लड़के की चाहना शिक्षित वाले में भी होती है कि दूसरा होना चाहिए बच्चा, दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है। लगातार लड़कियां अगर पैदा होती जाती हैं क्योंकि उनको लड़का चाहिए होता है,
और वो लड़का पैदा जब तक नहीं होता तो लड़कियां साथ साथ भी हैं। आप सर्वे करवा के देख लीजिए। मैं बधाई देती हूँ इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन को कि इन विषयों को बहुत गंभीरता से लेता है, इसके ऊपर चर्चा करता है। मैं अपने आप को बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन का एक तरह से मेंबर भी हूँ। इस नाते भी एक तरह से मेरा ध्यान रहता है इन विषयों पे कि आप किस तरीके की चर्चा कर रहे हैं। सर्वे करवा के देखिए इसमें कि जो महिलाएं जिन जो बच्चा पैदा करती हैं, लड़कियां बार बार होती रहती हैं, उसके बाद अगर लड़का हो जाता है, चाहे 7 लड़कियां हो, तब जाके अगर 8वां लड़का संतान होगी तब जाके उसकी डिलीवरी बंद होती है, अन्यथा लगातार उसको बच्चा पैदा करना पड़ता है। इसमें मैं बिल्कुल एकदम लोक में जो कहानी मतलब कही जाती है, कहानी नहीं बल्कि कहावत प्रचलित है हमारे यहाँ कि अगर 2-3 लड़कियों के बाद भी अगर एक लड़का होता है तब भी ऑपरेशन नहीं करवाने दिया जाता, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक आंख का क्या मिचना क्या खोलना। यानी कि अगर बाई चांस आपका लड़का अगर एक लड़का है भी, कहीं कुछ अगर हो गया तो लड़का तो चला जाएगा। तो इसलिए ये कहा जाता है इसके पीछे कि एक आंख का क्या मिचना क्या खोलना, मतलब कि दूसरा लड़का भी होना चाहिए। और एक ताकत का जो एक प्रिविलेज जो लड़का होने के नाते समाज को मिलता है, परिवारों को मिलता है, उनको लगता है कि लाठी कहीं होनी चाहिए ताकि समाज में एक रुतबा बना रहे। और ये मैं तब बात कर रही हूँ जब आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती, कोई बंटवारा जमीन जायदाद का नहीं होता, कोई धन दौलत उनके पास नहीं होती है कि लड़के अगर ज्यादा पैदा होंगे तो बंटवारे में आएंगे। लड़कियों की दूर की बात है, आर्थिक भागीदारी हम सब जानते हैं, पढ़ा लिखा कुछ वर्ग, मैं बिल्कुल नकार नहीं रही, हो सकता है आर्थिक रूप से लड़कियों को भागीदारी मिलती होगी प्रॉपर्टी राइट्स में, कानून भले ही बना हो, लेकिन आज भी गांव देहात में लड़कियों को भागीदारी परिवार की आर्थिक स्थिति में नहीं मिलती। अगर उनको भागीदारी एक तरह से मिलती है तो दहेज के रूप में मिलती है, सम्मान के रूप में मिलती है, और वो भी समाज में क्योंकि अपना एक इज्जत बचानी होती है, प्रवाह करनी होती है, तो देखा देखी चाहे भले ही कर्ज लेके देना पड़े वो देते हैं, दहेज देते हैं। तो इसके पीछे एक जो पूरी की पूरी एक जो बनी हुई है परंपरा कि लड़का होना चाहिए होगा, इसलिए हमें जनसंख्या बढ़ाती रहने चाहिए। ये मैं एक लड़की होने के नाते भी और उस वर्ग से आने के नाते भी ये कहना चाहूंगी कि ये कानून बहुत ज्यादा न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई जाति हो, कोई समाज हो, कोई भाषा हो, कोई क्षेत्र हो, सभी के लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लड़की की गरिमा को स्थापित करना चाहते हैं और लड़की का जगह जो एक बच्चा है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, जो समाज में जो लड़की की एक स्थिति होनी चाहिए, जो एक उसको भी एक नागरिक होने का अधिकार होना चाहिए, अगर आप उसको स्थापित करना चाहते हैं तो आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून न केवल कानून ही बनाना है बल्कि इसको ऊपर जागरूकता से एक अभियान चलाने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास, जब तक आपके पास कानून ना हो, छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप देख लें, कई बार पुलिस वाले, अभी हम जब ड्राइविंग के लिए निकलते हैं, भले ही गाड़ी में अकेला आदमी हो और मास्क नहीं लगाया हो उसने, तो उसकी पुलिस पकड़ लेती है, चालान कटती है, जबकि उसको पता है कि अगर अकेला बैठा हुआ पर्सनल गाड़ी में है, व्यवहारिकता तो ये कहती है कि उसको ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी पकड़ते हैं। इस वजह से सारी की सारी गाड़ियां जब निकलती हैं तो सारे मास्क लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि कानून का भय है, दंड, उनको पता है जुर्माना देना पड़ेगा, कितने लोग छूटेंगे। कुछ अगर भाईचारा, भाई लिहाज, भतीजावाज के लिहाज से होगा भी और किसी की अगर सत्ता में भागीदारी होगी तो उसको छूट जाएगा, अन्यथा तो आपको चालान भरना ही भरना पड़ेगा। तो ये क्योंकि कानून बना हुआ है, इसलिए इस डर की वजह से आपको लगाना ही है मास्क। ठीक उसी तरह अगर आप कानून की वजह से अगर किसी को एक लड़की हो जाती है, दूसरी भी लड़की हो जाती है, तो तीसरी वो कानून के डर से बच्चा पैदा नहीं करेगा। और यहाँ जब मैं बात करती हूँ, जो एक नरेटिव घड़ दिया जाता है कि एक खास वर्ग को दबाने के लिए या एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को कहने के लिए किया जा रहा है, ये मुझे लगता है नरेटिव बेबुनियाद है। हम भारत के हर एक हिस्से की बात कर रहे हैं, हर एक वर्ग की, हर एक जाति की, हर एक क्षेत्र की, इसलिए भी क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तमाम तरह के जो अधिकार हैं, वो अधिकार जो हमारा देश है, जो विकासशील की प्रक्रिया से गुजर रहा है, उस विकासशील प्रक्रिया से हम आगे विकसित प्रक्रिया की तरफ जाएं, इसके लिए हमें जनसंख्या को नियंत्रण में करने की जरूरत है। न केवल जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है बल्कि उसके पीछे के कारण जो मैंने बताया आपको कि जागरूकता इसके पक्ष में नहीं है। अगर एक माँ इनकार कर दे कि मुझे दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना, मेरे पास
पहले से ही 2 लड़कियां हैं। और हम कैसे भूल सकते हैं, अभी हम जब ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो मुझे मेरी जानकारी जहां तक है, लड़कियों ने ही अभी तक भारत का विश्व में नाम रोशन किया है, मेडल लेके आई है, तो लड़कियां ही हैं। और मैं जिस क्षेत्र में आती हूँ हरियाणा में, जहां झज्जर एक ऐसा गांव है जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से बहुत पीछे है, लेकिन उसी हरियाणा में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कुश्ती में भी गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, चैंपियन बन रही है तमाम तरह के खेलों में, चाहे कुश्ती हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे दौड़ हो, चाहे हॉकी की टीम हो, चाहे किसी भी तरह का खेल हो। हमारे जो जो लोकल जो हमारे गेम्स हैं उसमें भी नेशनल खेल रही है, तो वो लड़कियां ही हैं। और ऐसे समय में जब हम जब वैश्वीकरण की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु की तरफ बढ़ना चाहिए, वहां पर ये कानून निहायत इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक तरफ अगर लड़कियों को आप अवसर देते हैं, वो अवसर जैसे ही उस लड़की को मिलता है तो वो लड़की चांद पर नासा तक में जाने की हिम्मत रखती है। हम कैसे भूल सकते हैं, कल्पना चावला ही थी जो नासा तक पहुंची थी, वो हरियाणा की ही बेटी थी। ऐसे राज्य में जहां लड़कियों को आज भी शिक्षा का आंकड़ा बहुत दूर है, मैं अगर मेरे अपने एरिया की बात करूं, आज भी वहां लड़कियां कोई भी डॉक्टरेट नहीं है। मेरे अलावा आज तक किसी ने पीएचडी अभी तक नहीं की। ये हमारा एजुकेशन का रेशियो है। मैं यहाँ जब बात कर रही हूँ तो मैं केवल दलित या वंचित वर्ग की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ हमारे दूसरे सामान्य वर्ग की भी बात कर रही हूँ। ये आंकड़ा कितना दयनीय है कि एक क्षेत्र में जहां एजुकेशन पे हम लगातार बल दे रहे हैं, जहां बेटी बचाओ और शिक्षित बनाओ का हरियाणा सरकार गवर्नमेंट नारा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा का आंकड़ा क्या है ये हमसे छुपा हुआ नहीं। लड़कियों के पीछे किस तरीके से रेशियो घटती जा रही है लड़कियों की, वह लड़कियां कम होती जा रही हैं और उससे क्राइम बढ़ता जा रहे हैं, इसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। और वो परिवार जिनका हेल्थ का किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, आज भी महिलाएं दाई से ही अपनी डिलीवरी करवाती हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां आज भी टीके जो एक प्रेग्नेंट लेडी को लगने चाहिए वो भी तक नहीं लगते। आम घरों में डिलीवरियां ऐसे ही होती हैं। तो जहां आर्थिक पोषण, आर्थिक आधार स्थितियां, आर्थिक पोषण और जिस तरीके की जागरूकता का न होना, शिक्षा की का अभाव, तमाम तरह की स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों में भारत के क्षेत्र में रहने वाले जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, हमें सचेत होने की जरूरत है। और ये केवल एक पॉलिटिकल अवेयरनेस से नहीं होगा, बल्कि इसमें तमाम एनजीओज की भागीदारी हमारे सामने होनी चाहिए। वो इसके ऊपर खुल के चर्चा करें, इंटेलेक्चुअल जमात हमारी बाहर आए, वो इसके ऊपर बात करे। हमारे पॉलिटिशियन जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो भी इस पूरे इशू पर बात करें, ताकि भारत एक विकसित देश की तरह जाना जाए पूरे विश्व में। ये सारी की सारी चीजें जो महिलाओं की शिक्षा, रोजगार भी, हम जानते हैं कि महिलाओं का जो रोजगार की स्थिति है वो क्या है। पढ़ा लिखा एक वर्ग जरूर है जहां महिलाओं की भागीदारी अच्छी संख्या में हुई है, मुझे उसमें नकार नहीं है, लेकिन आज भी एक ऐसा वर्ग है जो आज भी पीछे। हम कैसे भूल सकते हैं कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं को मिलना चाहिए था वो आज भी संसद में बंद कमरे में पड़ा हुआ है। इसके ऊपर कोई भी दल बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि हम लोगों की मानसिकता ही ऐसी बनी हुई है, हम इनके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन जब हम जनसंख्या नियंत्रण के कानून की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे लगता है उनके रोजगार की स्थिति में भी सुधार होगा, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, उनकी नौकरियों में भागीदारी में सुधार होगा, उनका आर्थिक क्षमता भी बढ़ेगी। और आर्थिक क्षमता की जब मैं बात कर रही हूँ, हम सब जानते हैं, जब श्रीमती लतिका जी बोल रही थी कि आज भी जो घरों में जो काम किया जाता है वो ज्यादातर महिलाएं करती हैं, हम सब जानते हैं। उनको किसी तरह का प्रिविलेज, किसी तरह की नौकरी वो पे नहीं मिलती। मैं दूसरी बात एक और आपकी बातचीत में मैडम, अगर आप परमिशन दें, ये जोड़ना चाहती थी कि ये केवल उन महिलाओं की बात, आर्थिक स्थिति की बात नहीं है जो घरों में मतलब घर में काम करती है, बल्कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, नौकरी पेशा महिलाएं हैं, उनकी भी हालत यही है। वो एक तरह से सक्षम जरूर है आर्थिक रूप से, लेकिन उनकी आर्थिक रूप से क्षमता जो है फिर जाके घर पे पूरा संभालना, देखना, वो सारी की सारी जिम्मेदारियां भी उन्हीं महिलाओं की है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा हेल्पिंग हैंड वो ले लेती हैं, बर्तन वगैरह, झाड़ू वगैरह करवाने के लिए उनका हेल्पिंग हैंड हो सकता है उनके पास, मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके
वो महिला जो 9 से 5 नौकरी भी करती है, आके घर को भी देखती है, अपने बच्चों की भी होमवर्क देखती है, तमाम रिश्तेदारियों की भी देखती है, घर वालों के जो चाय पानी सेवा सारा दिन रात वो करती है, सारी की सारी चीजें वही महिलाएं ही करती हैं। और एक तरह से अलग तरह की एक डिस्कोर्स की इसमें भी जरूरत है, उत्पीड़न अलग तरह का है। हालांकि संवेदनशील होने की जरूरत इसमें सबसे ज्यादा पुरुष को है। मैं यहाँ इस विषय पे ये जरूर कहूंगी कि जब तक समाज का दूसरा पहिया, हम हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहते हैं कि परिवार दोनों तरह से चलता है, महिला और पुरुष, और दोनों ही रथ के पहिए हैं, अर्थात घर के रथ के पहिए हैं। और वो तभी चलेगी, घर रूपी पहिया रथ तभी चलेगा जब दोनों पहिए बराबरी में काम करेंगे। और आज जो शिक्षित महिलाएं हैं वो बराबरी की बात करती हैं, ना कि वो इसकी बात करती कि पुरुष से ही हमें पुरुष की जरूरत ही नहीं। ये डिस्कोर्स ही अपने आप में बेमानी है अगर हम ये कह के नकार देते हैं पूरे के पूरे नैरेटिव को, क्योंकि वहां उनका मतलब ये होता है कि पुरुष हमें बराबरी की हिस्सेदारी दे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। अगर एक नौकरी पेशा महिला है, वो जब शाम के नौकरी से आती है और एक पुरुष नौकरी पेशा करता है और वो शाम को आती है, तो वो औरत तो पर्स रखते ही रसोई में घुस जाती है और पुरुष आके ड्राइंग रूम में चाय की वेट करता है। तो ऐसा क्यों? एक दिन उसको भी बना लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? चाय तो कोई बड़ी बात नहीं, सबको बनाने आ जाएगी अगर रसोई में बैठ जाते हैं तो। और दूसरी चीज, ये मातृत्व वाला जो कंसेप्ट है, ये बहुत ज्यादा महिलाओं की जिम्मेदारी है, जागरूक रूप से महिलाओं की जिम्मेदारी है। जो पौष्टिक भोजन है, आहार, क्योंकि महिलाएं ही, हम सब जानते हैं, कितनी भी महिला अपने आप में मतलब शिक्षित हो या आधुनिक हो, लेकिन बच्चे जब रोटी मांगते हैं तो अपनी माँ से ही मांगते हैं, माँ को ही कहते हैं कि खाना दे दो। बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जहाँ बेटा या बेटी अपने पापा को कहते हो कि मेरा टिफिन पैक कर दो। मुझे नहीं लगता, मतलब हो सकता है कुछों में हो, लेकिन जो ब्रॉड लेवल पे जो एक चीजें देखी जाती है वो आज भी यही है। तो इस कानून में सबसे ज्यादा जो भागीदारी होनी चाहिए, जो चर्चा होनी चाहिए, वो महिलाओं के लेकर है। हम कैसे भूल सकते हैं कि जो वंचित वर्ग, जो सदियों से वंचित रहा है, अगर वहां पर परिवार सीमित होगा तो उनको अच्छा भोजन भी मिलेगा, अच्छा रहन सहन होगा, अच्छा लाभ उनको मिलेगा और वो अच्छी पद पर भी पहुंचेंगे। हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है। अगर लड़का नाम रोशन करने का अधिकार रखता है तो अवसर उपलब्ध कराइए, लड़की को भी उतना ही अधिकार है, अवसर मिले अगर उसको, तो वह अपने आप को साबित कर सकती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आबादी की हमारी जो बहुलता है वो अविकसित देशों की, मतलब जो अविकसित और विकासशील देशों की एक बड़ी समस्या है। ये ग्लोबल लेवल पे भी देखने की जरूरत है। जिस तरीके से वैश्वीकरण का जो परिदृश्य है, जो भी समाज विकसित हुए उन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया है। जब जनसंख्या कंट्रोल हुई तो तमाम संसाधन हमारे, जबकि हमारा तो भारत को तो अगर देखा जाए, हमारे यहाँ तो सब तरह की संसाधन है। खनिज के उत्पादन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, हमारे यहाँ प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य सबसे ज्यादा है। संसाधन हमारे यहाँ, सारे संसाधनों के होते हुए भी भारत में गरीबी का एक ऐसा अंतर बढ़ता जा रहा है कि कुछ जमात अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, कुछ गरीब से गरीब। इसके पीछे के जनसंख्या का लगातार बढ़ना भी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल जब आएंगे तब भी चर्चा की जा सकती है। मैं इन्हीं विषयों पे मैं बिल्कुल ये आज भी मतलब ये कहूंगी कि जो लोक कल्याणकारी, जो वेलफेयर सोसाइटी का जो एक कंसेप्ट है भारतीय संविधान में, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे सामने दिया था, उसमें जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, समाजशास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं, एकेडमिक हैं, खुले मन से इसके ऊपर चर्चा करें और सुझाव दें और ये कानून बने। ऐसी मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम प्रबुद्ध वर्ग ने मेरी बात को सुना। अगर कोई किसी विषय वस्तु पे इत्तेफाक न रखता हूँ तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कौशल जी, पूरे जोश के साथ। और आपने वस्तु स्थिति बताई, हमारी जो सामाजिक स्थिति है और महिलाओं की स्थिति है उसको कोई मना नहीं कर सकता कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज रहा है और आज भी है। और यह जरूर है कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ी है, और हम उस बात का बहुत हद तक उनके
परिवार में उनकी माताओं को और उनके पिताओं को, उनके दादा, उनके नाना, उनके मामा, उनके चाचा, उन सबको भी हम श्रेय देंगे कि उन्होंने कहा कि बेटी जाओ पढ़ो, बेटी जाओ खेलो, बेटी जाओ जॉब करो। तो स्वाभाविक रूप से समाज में जागरूकता आई है और बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को नौकरी करवाना अब यह सब स्वीकार हुआ है और सबको यह लगता है कि हमें अब बच्चों को बेटियों को भी पढ़ाना है और बेटियों से जॉब भी करवाना है। और अब जैसे हम देख रहे हैं कि बेटियां, जिस आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेटियां खेल के मैदान में भी भारत का नाम रोशन कर रही है दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर, और कला में और उनमें तो कर रहा ही है। तो स्वाभाविक रूप से अब उस ऐसे आपने हरियाणा के भी उदाहरण दिया कि कुश्ती जैसे खेल में भी लड़कियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो परिवर्तन है, समाज की सोच भी बदली है, लेकिन अभी भी एक बड़ा हम मानते हैं एक बड़ा वर्ग है। वह वर्ग इसलिए नहीं कि उसके पास जानकारी नहीं है, लेकिन वह ऐसे गरीबी के माहौल में जी रहा है जहां उसे लगता है कि शायद परिवार में एक बच्चे को सुरक्षित रूप से पूरा पालन पोषण करके बड़ा कर पाना क्या पता संभव हो या न हो, और इसके कारण बहुत सारे बच्चे करने की प्रवृत्ति रहती है। और दूसरा बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कारण भी मैं मानता हूं कि पति को मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, कुछ दिनों के लिए वापस घर आता है, फिर वापस घर जाता है। तो एक जो जिसे हम कह सकते हैं कि पारिवारिक सामंजस्य बनना और रिश्तों में जिस तरह की मैच्योरिटी आ पाना, वह भी हो नहीं पाता है। और उन सब के कारण बहुत सारे कारण उसमें जुड़ जाते हैं। कहीं हद तक यह भी है, कुछ लोगों की मान्यता भी ऐसी रहती है कि नहीं साहब, बच्चे तो भगवान की देन है, बच्चे अल्लाह की देन है। तो ये कुछ वर्गों में, कुछ लोगों में है, लेकिन यह एक तथ्य है कि जन्म दर कम हुई है। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि जो चीन ने हमने 1956 में शुरू किया और फिर हमने इमरजेंसी में बड़ा स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और उसका समाज की तरफ से एडवर्स रिएक्शन भी आया क्योंकि वो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन चीन ने उससे सबक लेते हुए 1976-77 में जो अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण की नीति बनाई, उसके कारण अमूमन ये माना जाता है कि लगभग 40 करोड़ एक्स्ट्रा बर्थ चीन ने रोक ली। आज वो 40 करोड़ हम चीन में ऐड कर लें तो चीन की जनसंख्या लगभग आप समझिए 190 करोड़ के आसपास पहुंचती है, 180 करोड़ के आसपास पहुंचती है। तो 180-190 करोड़ की जनसंख्या चीन की करते ही चीन की आज की जो समृद्धि है वो एकदम से नीचे आ जाएगी। चीन ने वो 40 करोड़ बर्थ रोक दी और हम नहीं रोक पाए। और ये जो भारत और चीन का बड़ा फर्क दिखता है वो उसने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया और हम नहीं कर पाए, यह एक बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर हम अभी भी प्रयास करके अगर हम 5-10 करोड़ 20 करोड़ एक्स्ट्रा बर्थ जो अगले 10-20 सालों में होने वाली है उसे हम रोक पाए, तो स्वाभाविक रूप से हमारे ही बच्चों को, हमारी ही आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ होगा। ऐसा मुझे लगता है। और इसको किसी धार्मिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से देखना या उसमें बड़ा उत्तेजित होना कि हमारे ऊपर ऐसा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल है, सबके लिए है। अब पॉलिटिकल उसके लिए जो भी चर्चा होगी वो पॉलिटिशियन अपने लेवल पे करेंगे। तो ये एक विषय था। लक्ष्मी, can you if you want to share something, you can speak on this topic and then we will take the I would like to start by asking a question to Lalita ma'am. Yeah. Ma'am, when we talk about implementing strict population control laws, there's Yeah. a fear that it may lead to women losing control over their bodies. Your thoughts of this? Personally, I feel that women are in a cleft stick. When we are forced to have more children, we still have no control over our bodies. And which is why I said that you need to look at short-term and long-term policies, both of them. Educated women, educated girls will tell you that they themselves would prefer to have less children because they have more socioeconomic opportunities available to them. Women who work, it is not easy to bring up a child. I have been a single mother for almost 25 years now. And I'm one of the lucky ones. I had enough resources, education, etc., to be able to do it on my own. Most women will find it very, very difficult even today, given not just the socioeconomic conditions, but also cultural. Socio-culturally, we are still quite backward, as Dr. Mukesh has pointed out. And it's very unequal in many different parts of the country. So it's a choice that women have to make. The fear that you will lose control of your bodies
let me be brutally honest. How many women in India actually, and I'm not talking about all of the world, just in India, how many of us actually do have control over our body? Let me be brutally honest. So it is a choice that women have to make, but women need to be empowered to make the choice that they feel is best for themselves. And that can only come through a combination of both education and a fair amount of disincentivizing childbirth or family size. And also, ma'am, when we talk about demographic dividend, why are we not speaking about gender dividend? What is the gender dividend that women have today in this country? We are still woefully behind men. So unless you have unless women are given, girl children are given, and women are given equal opportunity, how will we ever access that dividend? First, a girl has to be allowed to be born. Second, she has to be allowed to be given equal nutrition, both of which she doesn't get in many places in this country. Third, she needs equal education. Fourth, she needs the opportunity for whether it's skilling or training or whatever, or that level beyond just merely education. Fifth, the opportunity to be allowed to use her talents. If she's a good homemaker, fine, and she wants to be that, fine. She has every right to be one. But if she isn't and she doesn't want to be that, does she really have? Does every woman in this country have that right? Maybe the ones on this Zoom meeting, we have a certain degree of autonomy, but most of us don't have that autonomy. So the larger a family size is, the more the burden of that family, including child rearing, falls on women. Almost never is it the men. We are not talking just about giving birth and pregnancy. I'm talking about child rearing, not just producing the child, having the child. Is normally on women. And the more children you have, the less time you have for yourself. Forget about going out and getting a job, etc. Most of the women, as Dr. Mukesh pointed out, even the working women, they have a very unfair burden of looking after the family. I mean, how many men will even take their plate and take it to the sink to keep in our country? I have nothing personal against any man. But the fact is that many women are also equally patriarchal. And I have seen this through my life. Okay, it takes a lot of education, it takes a lot of awareness, it takes a lot of making men understand that women's economic contribution can often be more important in the growth of a country. For example, look at Bangladesh and look at Vietnam, two countries. The data from there will show you that the women who work in all these sweatshops, textile shops, etc., it's mainly women who work there. They're quicker, they're more loyal, they're hardworking. There's a lot of research done on this. You can find it anywhere on Google, any search engine But even then, they're the ones who go back home and take the burden, the maximum burden of household work, including child rearing. So autonomy it's easy to say that we don't have autonomy over our bodies, but our bodies also includes our minds. And mostly our minds are not trained to think in terms of autonomy. We were not trained to think in terms of equal opportunity. Women eat last. Women have the least nutritious food. There is an endless list that I can go on and on. I agree that perhaps some women who feel that they want to have more children and they are not able to, they feel that their autonomy is being trampled on. But 99.9% of women who are educated will tell you that yes, we want to get married and have children, but not one after another, and not keep trying for one particular gender child. Or even two, as the doctor pointed out before me. So social customs and social training, socio-cultural training that is given to women from the time they are born is still very heavily skewed against the female gender. Dr. Antul Tewatia has raised her hand. You want to say something? So Kuldeep ji, I think is very much relevant to what Lakshmi ji asked and what Lalita ji answered. I just wanted to give a small example that during my practice, I observed many females even from the rural areas who were not educated and who was not empowered. They wanted to have contraception and they wanted to have sterilization thing, but they were not allowed to because of family pressure, because of social pressure, because of husband pressure or whatever. So we need to have work on overcoming these pressures on women. So if we can work on having more empowerment or making those family educate,
that you should have a हम जो वो females चाहती हैं, we should have a corner in our heart that what she really wants. So if we talk about females in cities, it is understandable that a female in city is more educated and more exposed. But in my own experience and in my own practice, I have observed many females from rural area. They asked me and they kind of requested me to make their family understand for sterilization and this contraception, but due to family pressure they were not allowed to. So that is how we have this sorry state. There are states like Tamil Nadu that has a shadow ban on emergency contraceptive pills. Yeah. Should we not have a law to counter these? Yes, of course. See, there are not only Tamil Nadu but many states, I would say, they are banning this emergency contraceptive pills. But in my views, they should not be banned because it's an individual choice that whether she want to conceive the child or she don't want to conceive that child. So, in my views, they shouldn't be banned, and we should have a strong voice against this. Rather, we should educate, females. What I think that females who are working in NGOs, and we should be more vocal about telling females about contraceptions, about different type of contraceptions, about IUDs, about daily pills. So there should be more awareness in females regarding this. Yeah, I agree with the second part of what Dr. Anshul said, but the first part, one of the reasons why there is a sort of unofficial ban on the emergency contraceptive pill is because it is basically, remember, it's basically a hormonal change that it brings out in the body, and it forces the body to not get pregnant, for a girl not to get pregnant. So in the for the health of any woman, hormonal problems are, today there are a lot of hormonal problems in younger girls, etc. You'll find. It is always better to teach a child to practice safe sex than to depend on something like an emergency contraceptive pill. I don't know precisely the policy reason why Tamil Nadu has gone in for this, but remember that Tamil Nadu has a very high level of education, even amongst women. And it is possible that they feel that the use of it has been far higher than it should be. The emergency contraceptive pill is meant to be just that, an emergency pill, not meant to use if you don't have safe sex and you think you're getting pregnant. So maybe that's one of the reasons. So, I'll go along. That would be in medical discussion. These days, we are having more, more combination of drugs which are coming up, and accidental pregnancy is much more worse than imbalance of the regular cycle. What I feel. Dr. Sabeen ने hand raise भी किया है. Dr. Sabeen has worked for international organizations. She has worked for Medicine Sans Frontiers also. And she has traveled around the world, worked amongst the poorest of the countries, and also countries torn apart by violence in probably Iraq and Syria also. Dr. Sabeen, you want to share your viewpoint, and you also, since you come from Muslim family also, because there is a lot of, you can say, debate, discussion. I was also seeing some of the comments also targeting, say, that Muslims also have this and that. I would like to kind of target my question to Dr. Lalita. You have spent so many years with NCW. Today, of course, population is a bigger problem, but the core, I'm a gynecologist and an IVF specialist. So we also see a boom in IVF as an industry today. So according to the urban fertile population, we have somewhere around 21% getting at least a single consultation from an IVF specialist. Now, this is a huge conundrum of a balance, and the need for fertility indication in that case, as Dr. Antal would know, we have indicated and non-indicated cases. So indication in that case is just around 13%. What are your thoughts in that area? Because this is an entire industry, multi-billion-dollar industry, booming through for the same reason that we are working through policy to avoid. I have a very good friend in Chennai who's one of the biggest IVF doctors in the country. I'm not going to mention names, but I have seen her grow over the last 20 years.
once when I had a problem when I was the head of the NCW, I called her up to say, please explain to me why I should not be taking a particular step. And she did explain, and well, we agreed on some things, we disagreed on others. The IVF industry is both good and bad. One of the major reasons for the IVF industry is the pressure, socio-cultural pressure on women to have a child. Women, as Dr. Mukesh has pointed out, are often merely looked as vessels to have children. बच्चे ना हो तो तुम कैसी महिला हो? I've heard this in every language that I know, and I speak, read, write 4 languages. Every language, regardless of the amount of money a family may have, very often regardless of कितने पढ़े लिखे भी लोग हों, still महिला की अगर शादी ना हो, अगर उसके बच्चे नहीं हो, तो महिला है क्या? All sorts of insults will be thrown at her. And it's an unconscious bias that forces women often to come to IVF consultants. Also, let's be brutally honest here again. In the IVF industry, there are a lot of things that are done under the table. We know that there is sex selection that goes on. It's very difficult to prove it. Almost impossible to prove it because as you pointed out, it's $1 billion industry. And money can cover up many, many sins. I'm Dr. sorry to be so blunt on this show. And I on would this like to meeting, but actually, this is the truth. no, I So, agree with you. I would yeah. like to give an example of a case of mine. So I had a Okay. case around 5 years ago, and that time PCP and DT was really cracking down hard on sex determination in clinics. And I got a case as a referral from a friend who is also a gynae. The family is actually a very well-off family, and they wanted a. So have you guys heard of PGD PGM? Post gen Yes. So they wanted PGD PGM to be utilized for sex determination, which is impossible in India because Oh. it's done only in government labs, right? So this couple, so I did not touch the patient because obviously you ethically don't want to treat such patients because the patient was completely normal. Otherwise, they had frozen embryos. They took the embryos to Dubai, got PGD PGM done. They spent 30 lakh rupees just to ensure that the implanted the embryo transfer The embryo only was of male. male embryos was done. Exactly my point. And this is not, and this was 5 years ago. I think the number have increased Probably. exponentially after. So, I Probably mean, the male bias is very strong still in this country. so isn't the core problem then for population the whole patriarchal male choice that we are giving people through any damn means possible, right? Today, and the target for a solution should be precisely that, I believe, at least in my understanding. Look, patriarchy is mostly in the mindset. People are brought up believing that women have a certain role to play, that they have boundaries they must be in, etc. They must be fair, slim, tall, all of that. I mean, there are so many rules that women have to live by. It's mind-boggling. But and patriarchy, it will take centuries to go. However hard, however many of us work, मतलब मुझे तो लगता है कम से कम और 500-600 साल लग जाएंगे before real equality is available in every part, in every phase of life and in every in every sector of society, section of society, whether it's religion, whether it's politics, whether it's etc. जो भी है. Till then, I don't think that we can just wait saying that we have to only attack patriarchy for this. It is patriarchy that says that women should be, if a woman doesn't have a child, वो infertile है. क्या कहते हैं हिंदी में? बांझ. Banj hai. It's one of the most horrible words anybody can use against a woman. And the number of women who use this against other women is also mind-boggling. Yes, ऐसा that नहीं है is कि सिर्फ पुरुष something. कहते हैं, बहुत महिलाएं भी मतलब बाकी महिलाओं को शोषण करते हैं बहुत ज्यादा. So the thing is, that's why I said that we have to look at both short-term and long-term measures, and you must talk to the women, especially younger women, because Dr. Anshul was quite right. In the rural areas, because girls are less educated and they are always taught कि शादी तो तुम्हें करनी है. If you can't catch a man, if you can't hook a guy, if you can't get married, कैसी महिला हो तुम? क्या लड़की हो तुम? This is so common that I mean, it becomes a part of the social. It is a part of the social fabric and the familial fabric. Even families put pressure on daughters.
I have friends whose, I mean, my own daughters are extremely well educated, etc. But I come from an unusual family, so we don't expect them all to be mothers, etc., get married, etc. But it's a very, very, very rare family that will accept that really internally and say, "Ki koi baat nahi." I mean, so what? Men don't get married, so girls also don't get married. You have that choice. 99.9% does not and cannot happen even today in India. I mean, look at the way rape is still treated in India. Most rape cases are from people you know and from within the family. And I when agree. I say this out in public, 80%. the amount of outrage that I face from both men and women, not just men, by the way, is also, I mean, I'm constantly, even after so many years of work in this field, I always keep getting surprised. कि वाह रे वाह ऐसे भी होता है क्या sort of thing. And therefore, yes, women, there is an enormous socio-cultural pressure on women to have not just children, but to bear male children. But unless we all get together and fight this, you can't say that population control is not needed also. For me, the most important reason for population control is also sustainable life on this earth. How much more people can this earth actually, well, provide a decent sort of life to? Lalita ma'am, Nature has its own way of making people fertile, infertile. Let's not forget that. Nature can be quite unkind and cruel in many ways, but nature has its own way of ensuring that there is a certain level of population control. Here we are using science to even medicine and science to In even fact, overturn that. I don't know if it's right or wrong. This is a huge debate that can go no, on, to be and maybe very it's not today. honest, Is not the even time for that after debate. studying in IVF for so long, practicing for good 12 years now, I still think that it's a way for nature to basically secure itself. It's a infertility is a way of nature to protect its own well-being, and perhaps we Maybe I'm are not a really scientist, but really maybe, perhaps we are wrong to maybe. try and skip that in through scientific methods, but I think that is a discussion for another day. Yeah. ललिता मैम, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे इंस्टेंसेस में पेट्रार्की के पीछे हम वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल है? We women are also responsible for having the patriarchal society. Absolutely, I agree with you. I have said this, मतलब ad nauseum. मैं ये बोलती ही रहती हूँ कि it's not just men who are patriarchal. There are equal number of women who are. In fact, there are many, many men who are very decent, good men who agree that women should have equal respect, equal opportunity, and a lot of women who don't. So that's why I said that you take both men and women on board when you even talk about population policy. You must have both sides of the coin. मतलब आप चिल्लर का एक ही साइड देख के नहीं होता है काम. You have to look at both sides, and you have to talk to the youngsters because they are the ones who want change the most in many ways. And for them, their vested interests lie more in change than in continuing with the same old, जो traditions या जो भी है जो आजकल चलता है. I agree with you that women are as patriarchal as men. Many, many women are. जीवन राजपुरोहित, आपने भी हैंड रेज किया. आप हैं सर, ब्रिगेडियर साहब? Yeah, I'm there. Yeah. जी जी. Hello, everyone. Good evening. Sincere compliments to everyone for such a wonderful interactive session. And I think it must go down to every individual as such to understand the dilemma that we are in. It's a major social issue that is that India is struggling with. Sincere compliments, Dr. Kuldeep and everyone else. I wanted to put across just one or two points, if permitted and time permits by the coordinators. Firstly, as Lalita Madam said, we ourselves are responsible for it. Our Sanskriti, our ancient Indian culture did not say so. It is we who have over a period of time created this. And this enslavement that we have undergone over 800 years is possibly one of the reasons. And it's only we alone who can come out of it. And more the number of such seminars, more awareness, more talking is possibly the answer. Otherwise, we will continue to be in this mindset of getting troubled by the society, the patriarchal system, and so on. So my sincere compliments and thank you so much for setting the ball rolling, and more awareness, more webinars. Simply compliments, Dr. Kuldeep and everyone. Thank you. Professor Gopa Kumar. I have two quick questions.
Number one, is it not the high time that we should have a relook at the population policy now? We had relooked education thrice, and this is a major social policy issue, as has been rightly mentioned. Are we not expected to have a relook at the population policy as such, and let both the state and central governments and even the Panchayat institution, let them take equal responsibility along with the NGOs to ensure a better population planning and effective measures? Number one. Number two, nobody has linked the political aspect of this issue. Maybe because it is so much sensitive in nature. But I just wanted to caution that the electoral politics has much to do with population. And we are a young demography, and definitely that matters. But despite that, even in places like Kerala, I don't know whether you have reached this information, the Christian community desperately finding their population decline, some of the churches have come forward with the appeal that if you have 4 children, the church will be ready to subsidize further. And this has come from educated communities, educated Syrian churches, not from ill-educated. So these are some of the basic problems. So you cannot sideline political aspect of this. And as you know very well, the delimitation of the constituencies, that is going to be now taken out. And that will also give incentive for more Lok Sabha seats for those states which have done bad in population plan. Thank you. Mr. Nagarajan. कुलदीप जी नमस्कार आज के वेबिनार के लिए मेरा तो क्वेश्चन नहीं है कुछ ऑब्जर्वेशंस आई वुड लाइक टू मेक with regard to population, not just the population, the impact of women and all. Population actually by 1800 the population of the world was around 100 crore. By 20th century 2000 it has gone up to 700 crore. The population growth has happened only in these 200 years. Of course, world does not have a very clear statistics for many 100 years. Maybe some 1800 years or 1700 years do not have a proper statistics for that, or reliable statistics, but conjecture is made and population figures are actually rolled out. Only these 200 years, particularly this 1800 to 2000, the population has gone from 100 crore or 170 crore to, particularly in 20th century, 1900 to 2000, it has gone from 175 crore to 600 crore. Why this has happened? And the major contributors are China and India in this. Almost 200 crore we have contributed. 400 crore rise in the 200 crore to 220 crore has been contributed by us. That is the crux of the problem. Lalita ji raised 2-3 points. Actually, the limited resources. Even resources is not fairly shared by people across the world. America is consuming 40% of the important resources with 5% of the population. Even in India, city people, we are consuming more and village people are left without anything. We are consuming more. So resources and countries like Canada, Russia and all, they have got a big land, but no use. They cannot actually, India has got a small amount of land, arable land, but we can produce food and feed the world. See, these are all very different things. Okay? We cannot blame, but I agree that actually the poverty and the lower section of the society where actually the child production is more. For example, I can tell from my family history, my Nanaji had only 3 children 100 years before. My Dadaji had 12 children. So we had some 50 cousins amongst us. I am a 50th cousin. So we had, and some other people just had 2 children, even in 100 years before. Even now you can see, even educated family, uneducated also actually they would be having only 1 children or 2 children living in the slums. India, fortunately, the fertility rate is very high. You cannot have the same fertility rate in Russia, here or in the Scandinavian countries. So it is not a, but this 200 years is the crux of the issue.
The population has actually 100 years before, in 1900, our Rashtra Kavi, Subramanya Bharati, he told in one poem, India has 30 crore people. 30 kodi mugamudayal, he said. So there were only 30 crore. Now actually we reached 100 crore, 110 crore by 2000, within 100 years. So the problem has actually, within this 100, 150 years, the population explosion has happened. And as rightly pointed out, some doctors raise this IVF and other things, actually, this ban on this, contraceptive pills and all, actually. We should not go by the agenda set by the UN and other people. 40, 30 years before, they said actually you just don't give mother feeding to the people, children. You just go for the tin foods. Then after 30 years, they said actually, no, mother feeding is the best thing. You avoid all the tin foods. Sometime, some 40 years before, they said that you use this urea, this fertilizer. Now they are saying this natural agriculture is the best thing. Women is the major sufferer of this. Women is they don't have the right over their body. That's not all correct. I agree with that. But the population explosion happened in the 120 years, 130 years. Why it has happened? And it has happened in our region more. China and India are the major contributors. I was looking at the statistics of the OIC countries. Many of the countries did not explode much. The Muslim population exploded only in India and Pakistan or Bangladesh. So why it is so? That has to be actually, I don't have other scientific things to back up this. But these 100, 150 years are the reason. And women are the major sufferers. I agree with that. I agree. And they are the major sufferers. From child rearing to. True. There is very interesting statistics. If we compare Pakistan till 71, so East Pakistan and West Pakistan, and the population growth rate is quite high. And then Bangladesh came into being. And after that, initially Bangladesh birth rate is very high, but then it starts slowly going down. But Pakistan still is maintaining a high birth rate, though they have also reduced from 7 children per couple to around 4. But we see that the West Pakistan and the earlier East Pakistan, which is now Bangladesh, there is a huge difference. And it is an interesting study for everyone. Why Pakistan still being, you can say, living in some medieval era where having more children are considered good. And I would say some impact of that is still on some people in India also, and that is troubling the balance, and that is also making it as a political issue also. There are various dimensions, but most importantly, which has come today, that is that providing educational opportunities, providing employment opportunities will lead to empowerment of women and will lead to you can say more say in what size of family they want, and when they want to get married, and when they want to have children, and how many they want to have. I have one interjection to this. Education, definitely, because women have been employed in this country for centuries. Who are doing the field work and agriculture field work? 50% of the people actually, the weeding, cutting, the harvesting, most of it is done by the women only in this country. For centuries it has been done. But they were not empowered, because education will empower the people. We have to do that. Mr. Nagajan, may I please interject for a bit? I just wanted to kind of not just summarize, but in a way even contradict some of your points. So you did say that women, so I have worked in around 33 countries globally, and most of them are in crisis regions, because I work with MSF and UNSC. So I have seen countries like Rwanda picking up in terms of fertility rate, even with good education, just because population at that time was necessary after the genocide, right? Similarly, there have been Russia during Russian civil wars, and during the worst economic phase in Russia actually had the highest fertility rates, because the death of so the U5MR, under 5 mortality rate was that high. So people did not know if 2 or 3 kids would even make it out of like a brood that they bought. So I think socio-politically, putting socio-politics aside for a second, a lot of it matters on
the resources of a nation. You know, India, Pakistan, the entire southern continent, actually, if we look at it, even southern parts of, so several parts of South America, like Argentina, Chile, and Brazil, started increasing in population only when resource centric, so better food and nutrition gathered. Today, that has sort of become a problem because now the same population, instead of being used as a resource, is starting to consume more than it produces, right? And you are right about the fact that women have been working for so long. Even today, a large proportion of farm laborers are women in India than men, though decisions are still taken by men. So I think more than education is about decision making. Women, even though they work today, office going women, I get patients who are office going women who do not have the agency to decide whether they want to have a baby or not, or they want to have. There are women who hide from their husband that they are using a copper T or they are using a female condom because they don't want to have kids, but they are not even able to communicate them to their most intimate partners, which is what we need to change. We need to give women agency across the country, across the globe. And overall, when countries have done that, today Rwandan parliament has 73% women, right? And the country has boomed financially, a country which is an oasis in the entire Eastern African region, which is war torn for generations now. For over 3 decades there have been nothing but communal violence, rapes, lots of problems for every gender, but more so to female because commodification of female has been going on for generations in that area, right? And that is what I believe is necessary more than so education, of course, but along with education today, if I have someone working at my home, a maid servant, I would rather want him to have agency, even if education might not be a possibility at that age or at that position. Mr. Irfan Khan, you have Yes, also sir. raised hand. Are you there? I simply have Please. one comment to make, which is the fact that just last week in the parliament, the Minister for State for Health did mention that the Indian government is not looking at any population policy which is dependent on incentives and disincentives. So I just wanted to make that addition. I think this was with reference to what Dr. Kumaramangalam said at the beginning. But I just have a final question. I mean, I don't know if that, in line with the title of the discussion, I don't know if we've sort of addressed the fact that are we looking at the population control, whatever policies we're talking about, are they helping women or are they actually detrimental to them? I mean, we've heard a lot about what we need for the women. We need education. We need agency. I mean, it's all easier said than done. But as of now, what is happening is that a lot of states in India are actually contemplating such policies, which rely on coercive measures, which rely on incentives, which rely on disincentives. Now, is that going to benefit the women of India, or is it going to be harmful for them? I don't think we've addressed that question to its core, and I just want to leave it there. And I mean, I would really request and love to hear from the panelists on this specific point about whether it's going to help them or not. No policy is always good or always bad. In the short term, we may have a certain amount of approbation that women may have to face if they say that we want to have smaller families. And given, as I said, the religious, the social, the cultural differences in different parts of India, you probably will have different reactions. Like Professor Gopa spoke about the churches in Kerala. I didn't say it so bluntly, but I did say that there was in my thing that there were religious leaders who are now talking about incentives for families that will have more children. So there are many, there are, and what may be to one person coercive to another person may be a blessing. Women who are forced to have children over and over again without having any say in the matter, for them population control incentives or disincentives may come as a blessing in disguise. I have seen innumerable number of women having their children while plowing in the field. They take a few hours off, everybody will surround them and hold a sari or something around them. They have the child, within 3 to 4 hours, she's back at work or the next day. And I'm not exaggerating. I mean this seriously.
So, like I said, there is no one size fits all solution for a country like India. We need to look at long, short, we need to look at different religions, different levels of education, different levels of access to family planning, other types of family planning procedures, whether it's a copper tea or the the tablets that we take, etc., etc. There are many, many issues, and this is too short a time for us to discuss all those issues. But yes, there are people, many women who will be very grateful if they didn't have to keep having children. There are many people who may say that no, but I do want to have more children, and perhaps they should be allowed to have it. But there are many other issues that go into deciding the size of a family also. When we say education, we mean that it gives women a stronger chance to be able to exert some sort of autonomy and acquire some sort of agency. It's not a single size fits all. I keep saying this, no policy in a country like India can be single size fits all. But Right. education is a starting point. It's a good starting point. No, I completely agree with you, ma'am. I just want to make one small addition to that. I mean, the moment we talk about disincentives and the fact that even if a woman who is forced or has no decision making in producing the number of children that she has to, the moment you restrict issuing a ration card to more than 4 family members in that family, I think we pretty much know who's going to get affected more in that case. It's the women, it's the girls who would get less ration. It's the women whose nutrition levels will go down. So in a way, what you're saying that a lot of women who might be forced to produce more children will be happy with this with these kind of policies. I don't know whether, because the disincentives that have been earmarked on some of these policies are actually very anti-women. So I mean, I'll leave it at that. Thank you very much. No, I think you're jumping the gun here. The government in India has not announced any sort of incentives. The various states, let me finish please. Yes, ma'am. The various states that may be thinking about it, I don't think they're going to be in a great rush, because there will be enough people to talk to them about the pros and cons. But eventually, and it may the disincentives may not include what you're talking about, ration card availability of subsidized food or Manrega or whatever it is. There may be other ways of looking at it. There are many, many ways that could be available to a government, state or center. But there has to be some amount of what is commonly called coercion. Some people may agree with it, some people may not. But there is no law in the world that everybody will say is good. So there will be a certain amount of dissatisfaction with any sort of population control law that may be brought in. But I think what is more important is the general good, not always only one particular person or a particular community, or actually it's not fair to say community, or a particular section of a population. We need to look at the overall need for the country or for a state or for the country as a whole, whether we need a population policy or not, and what the overall effect of it will be on women, not just individual women and individual policies. There are many families in India where women do get equal access to food and opportunity and all of that, but percentage-wise, they're still very, very small. Dr. Majar Asif, you also want to ask something? You have raised your hand. Yes, Dr. Majar. It's actually not a question. I want to say something within 2 minutes. I will finish it. सभी लोगों को वंदे मातरम. See, nowhere in the world religion is correlated with everything as happen in India. यहाँ पर ड्रेस भी रिलीजियस है, लैंग्वेज है, फूड है, ग्रेन है, फ्लावर है, लैंग्वेज है, यानी everything is attached with the religion. That is a very, very unfortunate happenings in India. Please don't correlate this family planning with a religion. This is a purely a social problem. ये एक सामाजिक समस्या है और उसको आप उसी के नजर से देखिए. कुरान शरीफ में nowhere written in the holy Quran Sharif that family planning is banned. कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है
कि आप जो है, आप जो खुदा की बनाई हुई चीजें हैं उसमें आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर का जिक्र नहीं है, लैपटॉप का जिक्र नहीं है, मोबाइल का जिक्र नहीं है, प्लेन में चलने का जिक्र नहीं है, आखिर ये सब का मेंशन नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं। तो ये भी लिखा हुआ है कि कुरान शरीफ में ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब वो आदमी सबसे अच्छा है जो अपने फैमिली के साथ अच्छा हो। ये कहाँ लिखा हुआ है कि 10 बच्चे पैदा कर लें, आप इल्म नहीं दें, अच्छा ड्रेस नहीं पहनाएं, अच्छा खुराक उनको नहीं दें, अच्छी तालीम नहीं दें, अच्छी उनको सकाफत नहीं दें, अच्छी तहजीब नहीं दें, ये कहाँ लिखा हुआ है? सो प्लीज, ये एक सोशल इश्यूज है एंड लेट अस डिस्कस विद द सोशल एंगल। ये एक डिस्कशन था। दूसरी ये रिक्वेस्ट ये है आपसे जो वेयर बैठे हुए, देखिए आवर प्रॉब्लम इज दैट हम सोचते हैं we could not differentiate between a religion and the follow of a religion। हम ये सोचते हैं कि जो भी मुसलमान कर रहा है वो इस्लाम है। इट इज नॉट लाइक दैट। इस्लाम अलग है और मुसलमान अलग है। आई डोंट नो हाउ टू प्ले ऑन तबला। मैं तबला बजाना नहीं जानता। अगर मैं तबला बजाऊंगा तो आप लोग भाग जाएंगे, लेकिन जाकिर हुसैन साहब को वही तबला दे दीजिए तो तबला बजाएंगे तो सब कोई आ जाएंगे। तबला इज रिलीजन। तबला रिलीजन है। रिलीजन में खराबी नहीं है। द खराबी इज विथ अस। हमारे में खराबी है, हम उसको ठीक से नहीं बजा पा रहे हैं। सो प्लीज, जो भी मुसलमान कर रहा है इट इज नॉट अ इस्लाम, ऐसा नहीं है। सो ये दो एंगल्स के देखने की जरूरत है और जरूरत है सोशल अवेयरनेस की। देखिए ये सैनिटरी नैपकिन के लिए कितना बड़ा टाइप होता है अक्रॉस द कंट्री, लेकिन अवेयरनेस इतना हुआ, एक फिल्म बन गई कि अब जो है अब बच्चे भी माँ के लिए सैनिटरी नैपकिन खरीद के ला रहे हैं। इट इज फैक्ट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने सोशल अवेयरनेस किया। हमने जो है, जरूरत ये है, देखिए मैं एक जेएनयू में एक टीचर हूँ। हमारे जितने भी मुस्लिम फ्रेंड अराउंड 200-300, किसी के पास भी मोर देन 2 चिल्ड्रन नहीं है। किसी के पास भी नहीं है। ज्यादातर के पास एक है या एक और है। ये कहाँ हो रहे हैं? ये वहां हो रहे हैं दोज हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सो कॉल्ड मुल्लाज, जो उनको ये पढ़ा रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है। कुरान शरीफ जो है ये पढ़ने की चीज नहीं है, कुरान शरीफ समझने की चीज है। हम कुरान शरीफ को समझ रहे हैं, हम हदीस को समझ नहीं रहे, हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जरूरत है कि हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे कम फॉरवर्ड, वो आए और उसको रिलीजन के हिसाब से समझाएं। तो आई थिंक इट विल बी अ बेटर। थैंक यू वेरी मच। There are a couple of questions. Dr. Bharat, you want to ask some question, and Pankaj, you have some question? Dr. Bharat? Yes, first of all, I would like to thank and congratulate IFE to organize such a interactive series on this emergent issue and invite such expertise of different domains. Now, I would like to question Dr. Antul that the age of marriage is delayed up to the 25 years or 30 years, and because of this there are so many problems arising like PCOD and PCOS among the women. So does it influence in the policy making of this population control measure? One thing. Another thing is that I would just appreciate the comments or the observations given by the Mazhar Asif and the interpretation of the Quran. I really appreciate it. Thank you so much. Dr. Kuldeep, I mean, if the question is about whether increasing the age at marriage would limit the family size, if that's the question, then no. I think the question is that increasing marriage life is also creating some problems. So will it be, you can say, advisable to increase the age? I think, Dr. Bharat, is that the question? Yes, sir. There are certain health issues arising from this, and the because of age of marriage is delayed, like PCOD and POS among the girls, and it is very higher amount among the girls, and it is also difficult to but that problem comes when the marriage takes place in, you can say, late 30s or early 40s, and then it becomes a problem. But if it is in the, you can say, early 20s, then it should not be a problem.
So the issues are there. Definitely, there are issues due to, you can say, conceiving at a very later age stage in say mid 40s, etc. Then it might create some medical complications for the mother. But if it is in, you can say, late 20s, then it should not be a problem. Lakshmi, you want to add something? Yes, because when you are talking about early 20s, you're also giving a chance for women to be financially independent, which I think is important in helping them make those correct choices. True. Pankaj, you have some question? Sir, as I'm coming from a rural background, and as I have seen that there are a large number of female foeticide that goes on, and होता क्या है कि लड़के की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, एंड कई बार क्या होता है कि 10-12 डिलीवरीज होती हैं महिलाओं की जो है, एंड फीमेल फोर्टिसाइड के केस बहुत ज्यादा होते हैं. तो सर जैसे बालिका समृद्धि जैसी योजनाएं जो हैं सर, दे आर क्रिएटिंग भले ही वो 2000 की स्कीम है, मतलब सम पीपल से दैट कि इतना मॉनिटरी इवैल्यूएटिंग नहीं है, लेकिन वो एक छोटी सी फैमिली के लिए एक सपोर्टिव हो जाता है. देयर इज सम काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन. जो हमें जो सर मेन जरूरत है वो सर आगे के लिए है कि जो हमारा जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर स्कूल गोइंग जो गर्ल्स हैं वहाँ पे हम सर बहुत लैक करते हैं. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो एनरोलमेंट रेशियो है वो गर्ल्स का शुरुआत में बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन आप देखिए ड्रॉप आउट रेट जो है वो बढ़ते जाता है. एंड आगे आप जैसे जाते हैं तो ग्लास सीलिंग इफेक्ट जैसी चीजें भी आप देखने को मिलती हैं. तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सोशल वायलेंस जो है उसको लेके मतलब क्या है कि सेंसिटाइजेशन है या नहीं है सोसाइटी में या फिर गवर्नमेंट क्लास वगैरह में. मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि उसको कैसे कम किया जाए. I think Dr. Amtul is there. Doctor, there was a question that late marriage, increasing the you can say minimum age for marriage, may also leading to some problems, as the question the participant asked. And so therefore it is advisable. Is it advisable to increase the age or keeping it, you can say, 18, 20 or around that? So that was one question which we discussed when you were disconnected. And now Pankaj has asked about cases of female feticide and other social violence, other issues, and dropout rate. All those issues again related to awareness, education, economic status. Those issues are there. So if you want to comment on. So see Kuldeep ji, what I think is that age, having constricted on age is just not the solution, because right now what I feel is like from government sides, let's say अगर हम 20 साल, 18 साल, 22 साल, whatever we imposed on the people, whatever we imposed on the society, but even though अगर हम आज भी rural areas में जाकर देखें, so girls are getting married at the age of 16, at the age of 15, or maybe at the age of 14. So that is, I don't know why it's happening, but it is really happening. So making rule is not a solution, but what solution is making girls educated, making boys educated, having compulsion of giving sex education in government colleges and government schools is what I think is more important, because in private schools these days, let's say even in rural areas, even in urban areas, schools which are private, even they are small or they are big, but they are focusing on sex education more. But in government sectors, I feel sorry to say there's absolutely no sex education is given to students. So giving right sex education is important. Having females more empowered is what I think important. Giving them right to decide is what we need to focus on. So there are 3-4 things which we need to improve on, rather than having a constricted on age factors, because government can only implement things. It's we who used to have things in our mind and let people be aware of all these things. I'm Sanjeev Pandey from Samastipur, Bihar. Thank you very much, sir, for organizing this type of webinar. I am a student of geography and I was in northeastern states for many years. I agree with the speakers, whatever they have said, most of the things have been very much clear.
But I want to include one more thing, that for the population explosion in our country, one more reason is there, that is illegal migrants. If you go to Assam, in rural areas of Assam, Arunachal, Manipur, you will see the locals, they are having only 2 children, but many people who come from outside, they do not have any Aadhaar card or any other thing. They are having more, they are responsible for population explosion in that area. So I think this is a socio-political issue, and we should have some strict rules for that also. So country needs to implement some rules so that the population control is done. This is my personal opinion. And because I was in Assam, Arunachal, and Manipur, I have seen that. Even in Bihar also, some part of Bihar, not Bihar, illegal migrants are there. In Kishanganj, Katihar, and Saharsa, Purnia, if you go, you will see that, yes, population problem is there. We are responsible. Fertility and other things are responsible. High fertility rate. But illegal migrants are also one of the important factors which is responsible for the population explosion in our country. Thank you very much, sir. This is an important issue. Dr. कौशल, आप कुछ कहना चाह रही थी और डॉक्टर अंतुल ने भी हैंड रेज किया था. पंकज की बात में मैं ये कहना चाह रही थी कि बिल्कुल सही है कि बेटे की चाहत से बच्चे पैदा होने की एक बनती है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज है वो ये बनती है कि हमारी जो संवेदनशीलता है, मतलब हमारे जो घर में जो पत्नी है वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर भी पाएगी या नहीं, इसके ऊपर हम लोग मतलब हेल्थ के इश्यूज पे हम लोग बातचीत नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेटे की चाहत ज्यादा बढ़ती जाती है और वो मरने के कगार तक भी पहुंच जाती है. जो क्षेत्रीय जो समस्या एक तरह से आती है, अगर आप साउथ के ईस्ट में चले जाएं, वहां लड़के लड़की में ज्यादा से अंतर दिखाई नहीं देता. वहाँ सारी सोप्स पे भी काम खुले तरीके से लड़कियां करती हैं. तमाम जो हमारे जो फील्ड हैं काम करने के, रोजी रोटी के जो कमाने के जो साधन हैं, उसमें बराबरी का काम लड़कियां करती हैं. तो इसलिए जो सामाजिक जो जागरूकता है, जो लड़के और लड़की का भेद एक तरह से जो इस तरफ जो पाया जाता है नॉर्थ की तरफ, वो ईस्ट के क्षेत्र में नहीं आता इस तरीके से. लेकिन जो माइग्रेट, जो अभी जो बंधु बोल रहे थे कि जो माइग्रेट जो फैमिली होती है उनके ज्यादा बच्चे होते हैं क्योंकि उनके आधार कार्ड और दिस एंड दैट नहीं होता. मुझे लगता है इसको इस तरीके से देखने की जरूरत है कि अगर जब अपनी बातचीत की थी तो आर्थिक रूप से कैसे अक्षमता बनती है परिवार के बढ़ने से, उसको बताते हुए मैंने ये कहा था कि इकोनॉमिक फैक्टर एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है. एक जिले से दूसरे जिले की तरफ प्रवासी लोग जाते हैं, खासकर बिहार के लोग भी बहुत सारे हरियाणा के क्षेत्र की तरफ आते हैं या ईस्ट की तरफ चले जाते हैं. तो वहां पे जो संसाधनों का जो एक तरह से अभाव है परिवार का, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बजाय उसमें जनसंख्या वृद्धि का होना, क्योंकि उसके कारणों पर आप बात नहीं करना चाहते. जब तक आप समस्याएं, हम सबको पता है, जितने भी हम लोगों ने यहाँ बैठ के बात की है, हमने सबने समस्या पर बात की है, लेकिन उस समस्या का निदान क्या हो, उसको रोका कैसे जाए. हम जानते हैं कि संवेदनशील होने की बहुत जरूरत है, परंतु संवेदनशील हो कैसे. अभी जो एक भाई साहब बोल रहे थे कि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत कम बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन जो अशिक्षित है वो बहुत ज्यादा बच्चे हैं. तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है आखिर. सिर्फ एक सोशल इशू को आप ये कह के कि ये एक सामाजिक समस्या है, हम भी मान रहे हैं सामाजिक समस्या है, लेकिन सामाजिक समस्या को सामाजिक समस्या कह के उसके निदान की तरफ ना जाने, आप उसके कारण खोजने की जरूरत है. इससे सहमत असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन जब तक हम जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारणों पर नहीं जाएंगे तब तक हमारी चर्चा अधूरी है, क्योंकि कारण बहुत जरूरी है उस चीज का देखने का, और उसका समाधान क्या हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, पंकज जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है ड्रॉप आउट रेट का रीजन है क्योंकि बैकग्राउंड बहुत वीक है. तमाम पिछड़े इलाकों में जहां पूरा परिवार मिलके काम करता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं. मैं अगर बिल्कुल दिल्ली जैसी देश की जो राजधानी है, जो बहुत बड़ा एक वैक्यूम है पूरे प्रांतीय प्रवासों का, लेकिन वहां पर भी जो सुबह सुबह झाड़ू देने चली जाती है महिलाएं, वो परिवार उनका कहाँ से पड़ेगा.
कहाँ से शिक्षित होंगे? ड्रॉप आउट रेट तो अपने आप ही कम हो जाएगा। जब स्कूल से ड्रॉप आउट रेट कम होगा तो एजुकेशन कहाँ होगी उनके पास? एजुकेशन होगी ही नहीं। जो महिला सुबह सुबह, एक तरफ से की वो महिला है जो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजती है, तैयार करके भेजती है, गाड़ी में बिठा के टाटा बाय बाय करती है। एक महिला 5 बजे उठ के झाड़ू उठा के चल देती है पूरे शहर को साफ करने के लिए। तो आखिर उसके जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कैसे शिक्षित हो पाएंगे? क्या हम नहीं मानते कि ड्रॉप आउट रेट का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो ये दलित जो आबादी है, जो स्वच्छकार समाज की आबादी है, जिनको पूरा परिवार काम करता है, उसके बाद 2-3 क्लास पढ़ते हैं, वो झाड़ू देने का काम पीढ़ियां शुरू कर देती हैं। लेकिन हम उसको कारण के जानते हुए भी हम उसके पीछे क्या कारण है जनसंख्या वृद्धि का, यही तो सबसे बड़ा कारण है, आर्थिक संपन्नता। क्योंकि अगर आर्थिक संपन्न होगा तो व्यक्ति उसी तरीके से काम भी करेगा, ड्रॉप आउट रेट रुकेगा। जागरूकता आएगी किससे? आएगी शिक्षा से। एजुकेशन जब तक उसके पास नहीं होगी, अवेयरनेस आ ही नहीं सकती। तमाम माध्यमों से लगा लीजिए आप, कोई आपको शायद ही नजर आएगा कि अवेयरनेस दूसरे माध्यमों से आती हो बजाय शिक्षा की। शिक्षा सबसे सशक्त माध्यम है हमारा। जी मैम, ड्रॉप आउट रेट के लिए जो मैम मेन रीजन आप कह रहे हैं कि आप ऐसे कह रहे हैं कि उनके पास वो डिप्राइव्ड सेक्शन वगैरह है, मैं ऐसे कहता हूँ कि मैम जब वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज, वहाँ पे जब टॉयलेट्स ही नहीं है, जब वहाँ पे फीमेल के लिए टॉयलेट्स ही नहीं है, 35,000 स्कूल्स अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ, तो ड्रॉप आउट रेशियो ऑटोमेटिक ही है कि ड्रॉप आउट रेशियो वहाँ पे आएगा। देखिए, समाज जिस वातावरण में चलता आया है और आज से 50-100 साल पहले तक न स्वास्थ्य की उतनी सुविधाएं थी, और आजादी के समय हमारी अगर एवरेज एज भी देखें तो 28 साल 30 साल की उम्र है लगभग, अब वो बढ़ते बढ़ते 60-70 तक पहुंची है। तो एक तो बड़ा फर्क परिवार को अपने विश्वास होने का, जैसे हम हमारी दादी से बात करते थे तो उनका यही कहना था कि भाई हर परिवार में 10-12 बच्चे होते थे, 3-4 बचते थे, 7-8 तो चले जाते थे। कोई बीमारी आई, कभी कुछ हुआ और डेथ हो गई बच्चे की, इलाज भी नहीं मिलता था। तो एक बहुत बड़ा कारण था बड़े परिवार होने का, ज्यादा बच्चे होने का, कि भाई जिंदा कितने रह पाएंगे। दूसरा ये भी था कि भाई खेत में काम करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए। अपना कोई अगर पेशा है, पारिवारिक पेशा है, तो उसमें 4 लोग कमा के लाएंगे तो परिवार के लिए कुछ मदद मिलेगी। जो आज भी मैं मानता हूं कि अगर कुछ समुदायों में अगर बच्चे ज्यादा पैदा करने की है तो वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि भाई 4 हाथ होंगे कमाने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से रहेंगे। और जैसा हमारे चर्चा में आया कि भाई एग्रीकल्चर में तो महिलाएं भी काम करती है, बहुत सारा आया कि भाई घरों में काम के लिए है, साफ सफाई के काम के, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें महिलाओं का भी योगदान है, तो वहां बेटियों से भी काम करवाते हैं। और दूसरा, जैसे पंकज ने प्रश्न उठाया, मैं ये मानता हूं कि ये ड्रॉप आउट रेट का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि घर में दूसरा छोटा बच्चा आ जाता है तो माँ कहती है भाई मुझे खेत में काम करना है, छोटे बच्चे का ध्यान रखना है, तो तूने 5वीं तक पढ़ाई कर ली, अब घर में रुक, छोटा बच्चा उसका ध्यान तू रख, क्योंकि मुझे तो खेत में काम करने जाना पड़ेगा। तो स्कूल अब जाए, 5 क्लास पढ़ ली, अब आगे पढ़ के क्या करेगी। तो बहुत सारे कारण हैं, और इन सब कारणों का अब जो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी सामाजिक, जो हमारी सांस्कृतिक, जो हमारी आर्थिक परिस्थितियां रही और उसमें जो वातावरण बना, लेकिन अब हम ऐसे एक मुकाम पे हैं जहां हम देख रहे हैं कि चीन ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय के कारण उन्होंने कम से कम 40 करोड़ जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन हो सकती थी वो उन्होंने रोकी, और उसके कारण उन्होंने अपनी जनसंख्या के लिए स्वाभाविक रूप से बेटर लिविंग कंडीशंस पैदा करना और बेटर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस पैदा करने के एक वातावरण बनाया। हम वो नहीं कर पाए, ये हमारी एक गलती रही। उसके बाद ये सही है कि जागरूकता आने के बाद जनसंख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है, वो जनसंख्या वृद्धि दर है हमारी कम हो रही है। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि चाहे राजस्थान में हुआ, चाहे कुछ राज्यों में हुआ जहां सरपंच का चुनाव लड़ना है तो आपको 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते, प्रमोशन सरकारी नौकरी वगैरह के लिए 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते, उसका फर्क पड़ा है। और उसका फर्क हर समुदाय पे पड़ा है, क्योंकि किसी को राजनीति में जाना है, किसी को सरकारी नौकरी में जाना है, तो सब ये समझते हैं कि भाई अब ये रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि और दूसरा सबसे बड़ा फर्क आया कि पढ़ाई में और नौकरी में और हर जगह अवसर जहां भी मिले तो लड़कियों ने अपनी छाप छोड़ी है। तो लोगों को ये भी लगने लगा कि भाई बेटी भी अब हमारे जीवन में हमारा नाम कर सकती है, परिवार को आगे बढ़ा सकती है। तो इन सब कारणों से मैं ये मानता हूं कि बड़ा फर्क आया है। और लेकिन एक बड़ा हमारा वर्ग अभी भी खास तौर से कुछ राज्यों में जहां गरीबी भी ज्यादा है, और जहां जो पांडे जी ने विषय उठाया कि
बाहरी जो लोग आ रहे हैं और उनकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ कानून बना के कुछ पाबंदियां लगाने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता आज हमारे वक्ताओं ने, महिला वक्ताओं ने पूरे विस्तार से उस पर चर्चा की और उन विषयों को रेखांकित किया और ये बताया कि भाई जनसंख्या कम रहेगी, परिवार छोटा रहेगा तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये महिलाओं की चॉइस होती है, महिलाओं को कोई खुशी नहीं होती कि हर 1 साल के बाद फिर 9 महीने की तकलीफ झेलना और फिर उस बच्चे को 4-5 साल तक पालना। ये किसी के लिए नहीं, पुरुष को कोई कष्ट नहीं है उसमें, और वो तो उसके लिए तो ये लगता है कि अब घर में बच्चे हैं तो खिलाओ पिलाओ सब कुछ करो, मैंने तुमको पैसा दे दिया थोड़ा बहुत। तो सारी जो तकलीफ है वो महिलाओं को आती है और इसलिए ये मानना पड़ेगा और हमें महिलाओं को ये चॉइस देनी ही पड़ेगी। और ये चॉइस में जैसा अभी विषय आया और जैसा डॉक्टर सबीन ने भी बताया कि इवन नौकरी करने वाली महिलाएं भी ये चॉइस नहीं रख पा रही है कि वो परिवार को नियंत्रित कर पाए, तो स्वाभाविक रूप से उसमें सरकार की तरफ से कुछ पाबंदी लगाना, कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और तभी हम शायद उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और कौशल जी ने बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल दिया मास्क लगाने का कि भाई जब आपको पनिशमेंट का डर होता है तब आप कानून और व्यवस्था का पालन करते हो, जानते हुए भी कि अगर ये आप पनिशमेंट नहीं लगाएंगे तो हर आदमी मास्क घर पे छोड़ देगा और वो बीमारी फैलेगी, जिंदगियां जाएगी, लेकिन आदमी परवाह नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसे लगेगा मुझे जेब से 500-1000 रुपया निकाल के देना पड़ेगा तो वो मास्क लगाने लगे। तो उसी तरह इस तरह की भी जागरूकता आएगी तो सरकार को कुछ नियंत्रण, कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। इस पे लगभग सबकी सहमति है। आप सब लोगों ने समय दिया और आप सब विद्वान जनों ने अपने विचार रखे। हमारे पास समय की सी मर्यादा रहती है, बहुत ज्यादा हम बातें नहीं रह सकते और आप सबका बहुत बहुत आभार।